Hey guys, I'm just Singh Gautam from Daffodils Schools, and now I'm just and we are just starting online classes only for you. I hope just doing well at home and just keeping your studies continue. Okay, now let's talk about rational numbers. Understand? So first of all, everyone is just ready for our session. Okay, and before it, have just talk about closure property. Okay, what is this closure property for any rational number a and b belongs to just an rational number, I mean belongs to R, so the sum of just both rational number will belongs to R. अंडरस्टैंड आई मीन कहने का मतलब ये है कि अगर दो रैशनल नंबर अगर बिलोंग करती है आर से, आई मीन सॉरी बिलोंग्स टू टू नंबर्स आर बिलोंग्स टू आर, दैट द सम ऑफ जस्ट एंड दिस नंबर will also belong to rational numbers. Understand? So now just talk about today I'm just going to discuss about commutative property for rational number. अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप कोई भी दो नंबर लो, जैसे आई कैन जस्ट टेक टू नंबर 3 and 5. अगर आप इन 3 और 5 नंबर को लो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स यू कैन जस्ट add both numbers in any order. आप उनका सम 3 + 5 कर सकते हो या 5 + 3 कर सकते हो, दोनों का 5 + 3 लिख सकते हो या 3 + 5 लिख सकते हो, दोनों का सम एक ही होगा. आई मीन यू विल जस्ट गेट अ इक्वल सम. अंडरस्टैंड? तो नाउ जस्ट टॉक अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड वी कैन जस्ट ऐड बोथ नंबर्स इन एनी ऑर्डर, दैट इज जस्ट कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Okay, तो now listen for any two rational numbers a and b. दो rational number a and b के लिए अगर हम बात करें तो rational number are commutative for addition and multiplication. तो rational number is commutative for addition and multiplication means you can just add two numbers in any order. You can just write 3 + 5, you can just write 5 + 3. No change. I mean both the terms are equal. Both terms are equal. Okay, for additions के लिए come on son have a look. A plus b. I mean you can write this 3 + 5 or b + a. Means you can write this in 3 + 5. You can just write 5 + 3. No change. Okay, both the terms are equal. So commutative property means you can just add two numbers in any order, that is called commutative property. Okay, and now rational number are commutative for addition and multiplication, that is just showing it's commutative for addition and that is just for multiplication. A into b is equal to b into a. I mean आप 3 into 4 करोगे, you just multiply some two numbers 3 into 4, yeah you can just write 4 into 3. No change in just in both terms. You can just write a into b, you can write b into b a. I mean you can write 3 into 5, 5 into 3, you get this term 15 in both terms. Okay, so first of all rational number are just commutative for addition and multiplication. Understand? Now just let's go ahead. Rational numbers are not commutative for subtraction and division. अंडरस्टैंड? रैशनल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न के लिए कम्यूटेटिव नहीं होती है. आई मीन फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए a - b इज जस्ट नॉट इक्वल टू b - a. यू कैन जस्ट से दैट कि अगर इफ़ यू जस्ट गेट 5 - 3 यू गेट 2 and 3 - 5 you get this and -2. You can see the difference between a - b and b - a. तो आप you can just write a 5 + 3 या 3 + 5, but you cannot just write 5 - 3 3 - 5 because there are a big change. They are just in change of sign. Understand? So you cannot just write any number a - b is just not equal to b - a. Okay, and I can say that in this other hand कि you cannot just subtract two numbers in any order. Okay, you cannot just write 5 - 3, you cannot just write it 3 - 5. Okay, तो आप दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में
किसी अदर ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. 5 माइनस 3 है तो 5 माइनस 3 ही होगा, उसको आप 3 माइनस 5 कैन नॉट बी रिटन. अंडरस्टैंड? एंड कम ऑन अंडरस्टैंड, लेट्स गो अहेड फॉर डिवीजन. ओके, नाउ जस्ट सी फॉर डिवीजन. A अपॉन B इज जस्ट नॉट इक्वल टू B अपॉन A. बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए भी अलाउ नहीं होती है. आई मीन डिवीज़न के लिए कम्यूटेटिव नहीं होती है रैशनल नंबर, बिकॉज आप 6 अपॉन 2, हाउ मच यू गॉट? 3. तो यू कैन नॉट जस्ट राइट 2 अपॉन 6 बिकॉज 6 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 6 देर आर बिग डिफरेंस. ओके, तो फॉर डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जस्ट नॉट, सॉरी, डिवीजन आर जस्ट नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, या रैशनल नंबर आर जस्ट नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन. अंडरस्टैंड? अब हम यहाँ पे कम ऑन लेट्स सी एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, सो कम्प्रीहेंसिवली. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट, जैसे यू कैन जस्ट सी a इक्वल टू 3/7 एंड यू आर गिवन b इक्वल टू -1/4. ओके, एंड नाउ we just try to get a plus b, and you can just know, I think you just know about it very well, how to get the sum of this and two rational numbers. First of all, take this an LCM. Again, this 28, divide this number 28 4 times and multiply this number 12 minus again 7 minus 1 multiply minus 7, it's a 5 upon 28, and don't need to. And now you just get b plus a, -1/4 plus 3/7, 5 upon 28. So you can just see here a plus b is equal to b plus a. तो आप both condition, in both condition sum are equal. अंडरस्टैंड? आप देखोगे कि दोनों कंडीशन में आप a प्लस बी देख सकते हो और b प्लस a लिख लो, दोनों कंडीशन में आपका आंसर इक्वल होगा, आई मीन सेम होगा. ऐसी कंडीशन आपके मल्टीप्लिकेशन में है. मल्टीप्लिकेशन में आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, आई मीन a इंटू बी करोगे और यू ट्राई टू जस्ट गेट b इंटू a. दोनों कंडीशंस में यू गेट दिस सेम आंसर. अंडरस्टैंड? आई होप यू हैव दिस एंड वेल अंडरस्टूड इट. एंड प्लीज़ make us a lot of practice of questions and can get just a lot of questions in your books. Okay, and try to just make a lot of practice and don't waste your time in just foolish things, and don't try to go out of the house. And if you try to go, to please just use sanitizer and mask, whatever you have. Okay, so commutative property of this rational number in a word, if I say, so you can just add any two numbers in any order. अंडरस्टैंड? दो नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो. इट इज ओनली कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, नॉट फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, दैट इज या बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है और हम कैलकुलेशंस में बहुत यूज भी आती है. अंडरस्टैंड? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, एंड प्लीज़ मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट जस्ट अंडरस्टूड इट, बिकॉज यू हैव लिसन्ड अबाउट दिस कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके, जितनी प्रैक्टिस करोगे यू विल जस्ट बिकम मोर परफेक्ट. ओके, तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट कॉल मी एंड सेंड मी एनी मैसेज ऑन माई पर्सनल नंबर. प्लीज़ make a lot of practice of these question and don't avoid to see this video. Don't leave it for just the next day, because जो भी करना है today. Okay, don't leave this in any video for further. Yeah, okay, तो don't leave it. And now today that is just a video आपको आज ही देखना है. Don't just avoid it. Okay, तो now that's it. Best of luck.